That was Jai Radha Madhava? No. I'll do, huh? Hare Krishna. So this is also Zoom. You're on Zoom. I don't like. All the people on Zoom, you should come here and Zoom Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaladari Jaya Gopi Janavalabha Girivaladari Yashoda Nandana Brajadana Ranjana Yashoda Nandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaladari Gopi Janavalabha Girivaladari Yashoda Nandana Brajadana Ranjana
Yashodanandana Brajaranarangana Yashodanandana Brajaranarangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Hari Jaya Radha Madhava Hari Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada ki Jai. Jai Shri Shri Radha Govinda Dev Ji ki Jai. Govinda, Govinda, Govinda. Prabhupada's first deity was Govinda. We're waiting. आज की Gopashtami, today, very auspicious day today. So, Sundarlal Prabhu, you have to speak about Gopashtami. Okay, you say something. Krishna's Leela. Leela बढ़िया है, Leela अच्छी है, but philosophy और अच्छी है, ये better. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी जो है बहुत समय से भारत में सेवा दे रहे हैं और राज्य के समय से ही प्रभु जी सेवा में लगे थे. तो हम सभी प्रभु जी की बहुत आभारी हैं वो आए और हमको सब देने के लिए. अभी प्रभु जी हमको कथा सुनाएंगे गोपाष्टमी और विकटनेस विशेष हम लोग चर्चा करेंगे. प्रभु जी चर्चा सुनेंगे. एक बार मुझे धन्यवाद.
Dhurta. Okay. Yeah, lage? Then? Wickedness is dhurta, cunning. Cunning. Yeah, yeah. More than cunning. Bad. Bad cunning. Yeah. Because that is the topic of the Leela of Gopashtami. When Krishna kills the demons in Braj, there's a significance of the different demons being killed, which is killing the different anarthas in our heart, symbolic of our different anarthas. तो कृष्ण में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कई असुरों का वध करते हैं वो जो है ये जो असुर हैं ये हमारे हृदय में जो बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं. So the Leela, Gopashtami Leela, with these two anarthas of weakness and wickedness. तो जो गोपाष्टमी जो लीला है वो हमारी दो कमियों को बारे में बताती है कि जो हृदय दुर्बलता धूर्तता ये हमारे हृदय की जो कमियां हैं उनके बारे में जो है इसमें वर्णन मिलता है. So the Leela goes, Krishna and the cowherds, Nanda Baba, Yashoda Mai, they're all living in Gokul and everything is going wrong. Demons keep coming and attacking and so many disturbances. तो इस लीला में देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है बार-बार जो है असुर आते हैं आक्रमण करते हैं. Putana came, disturbed, Shakatasura came, different demons came, and Krishna killed them. But the Brijvasis are thinking, it's very dangerous. This place is very inauspicious. All these bad things are happening. Better we move somewhere else. तो पुत्र आई और शक्ता को सुराया कई असुर आए कृष्ण ने उनका वध कर दिया लेकिन जो ब्रजवासी वो सोच रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे बहुत अशुभ हो रहा है और खराब है वास्तु खराब है कुछ भी better fix it. जो स्थान का गड़बड़ है या वास्तु का दोष आ गया है इसलिए इसको बदलना पड़ेगा. Isn't it? Sometimes they tell us, oh yeah, your door is bad. Better break that door, fill it with bricks and make another door. And then it's auspicious. So Nanda Baba sat with the Gopas and they discussed and I think, okay, the whole thing is inauspicious. We should move to Vrindavan. Vrindavan is all beautiful, forest, very peaceful, Shanti. That's the place. Let's all move to Vrindavan. Cows, no luck guy. Kaum nahi hai. Cows, bulls, bale, all loaded in the wagon, all the furniture, all possessions loaded in the wagons, and they all went to Vrindavan. And Krishna and Balaram, they're on the wagon, and they are going on the way to Vrindavan. They are so small, sitting in the lap of Mother Yashoda and looking and seeing the trees and the mountains and the birds and going through the forest, and Krishna is thinking, wow, very beautiful. कृष्ण जो है अभी बहुत छोटे हैं कृष्ण बलराम वो अपनी माँ जो माता की गोद में है यशोदा मैया के और बलराम जी रोहिणी माता की गोद में है और वो भी झूले में बैठ के आनंद ले रहे हैं यात्रा का और वो देखते हुए जा रहे हैं पेड़ों को देख के बहुत सुंदर है. And he's thinking, I shall come and see this forest. I shall come and see this forest. When we reach in Vrindavan, I will tell my mother and father, I will go with the cows
I will go out every day with the cows and see these forests. कृष्ण जो है विचार कर रहे हैं कि मैं इस जंगल को देखूंगा, मैं इस जंगल को जाके वृंदावन को अपने बारे में कहूंगा, मैं चलने जाऊंगा, अब मैं पूरे वन को देखूंगा. It's a long story. We have less time. बहुत लंबी कथा है, हमारे पास समय बहुत कम है. They reach Vrindavan, they establish their residence, everything, Goshala, everything is established. वृंदावन पहुंचे और उन्होंने अपना जो है दरबार स्थापित किया, गायों को गौशाला बनाई और सब कुछ जो है सेटल हो गया. उसके बाद And then Krishna is thinking, now it's time. I will tell my father now, I would like to go with the cows and see these forests. तो उसके बाद कृष्ण जो है हमारे संग हो गया, अब सब कुछ जो है ठीक से चल रहा है, तो मुझे बताना चाहिए नंद बाबा को कि अब मुझे जो है गायों को चराने के लिए वन में जाना है. And he says, Baba, I have an idea. And Mother Yashoda heard, he has an idea? Oh no. तो कृष्ण जो है नंद बाबा के पास गए कि बहुत मेरे पास एक विचार है, मेरी योजना है. तो यशोदा मैया चौक आश्चर्य से देख रही है, वो देखते हुए सोच रही है कि अच्छा इसके कुछ विचार है, तो चिंता में पड़ जाती है कि अच्छा नहीं इसके क्या योजना है. My chota balak have idea, always something is wrong. छोटा अच्छा है और उसके पास कुछ जो है योजना है, तो कोई अच्छी योजना तो होगी नहीं. And Nanda Baba, yes, but what is? I want to go to forest. I want to go in the forest. And Yashoda Maya, I knew, this is wrong. तो नंद बाबा पूछते हैं ठीक है बताओ क्या योजना है तुम्हारी. तो बाबा मैं वन में जाऊंगा, गाय चराए. तो यशोदा मैया बोलती है मैं जानती थी अच्छा नहीं. Can't imagine actually, no? We sort of try to explain these leelas, how they are, but you can't really imagine the scene at the time, how Krishna is looking and how he's speaking, how she's reacting. Something amazing. तो ये सब हम जो है चिंतन नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते कि वास्तव में कृष्ण कितने सुंदर हैं और वो किस तरह से लीला पालन प्रदान करते हैं, किस तरह की वार्तालाप होती है, उसको हम चिंतन करना संभव नहीं है. But Krishna was that age where it was time. That was the time. Usually the parents will tell the children, now you go and do this, now you do that. It's very rare that the child will come and say, now I want to take up. So he was surprised. So then Nanda Maharaj was in a mood, but Mother Yashoda was completely against. No chance. तो सामान्य देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो जिम्मेदारी लेते नहीं देने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं कि कृष्ण भगवान बहुत जल्दी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और नंद बाबा भी इसी भाव में थे कि हाँ अच्छा है, लेकिन यशोदा मैया बिल्कुल भी इसको जो है सहयोग नहीं की, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है. But Lord was adamant. He was determined. I will go. He was very determined that I will go. And he told all the cowherd boys, the bigger boys, they were already going every day because their age is such. They're already going. They will protect me. तो लेकिन भगवान बोलते हैं, भगवान बहुत दृढ़ है, नहीं मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगा. और बोले बहुत सारे जो है बड़े जो है गोप हैं वो जा रहे हैं, वो मुझे सुरक्षा देंगे, लेकिन मैं जाऊंगा. And Dauji is there. Don't forget Dauji. Lord Balaram told, I am every day going. He will come. I will protect him. I am Baldao. Why are you afraid? I will take care. तो बलराम जी भी हैं और बलराम जी बोलते हैं कि हाँ मैं भी हूँ, मैं बलदाव हूँ और मैं जो है इसको सुरक्षा दूंगा, मैं रोज जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो बलराम जी भी सपोर्ट करते हैं. And Nanda Maharaj is not speaking because it's his wife, so you can't speak. But he was going like that, because if you do that, you don't get in so much trouble. You get less trouble. So he was, and then finally she said, oh, then go, then you go. तो नंद महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं और यशोदा मैया की तरफ देख रहे हैं. यशोदा मैया को इशारा करे और देखो क्या करें.
जो है बिना यशोदा मैया की सहमति के तो फाइनली नंद महाराज सारा में कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए देखो ये सब बोल रहे हैं तो यशोदा मैया फाइनली यस कर देती है, हाँ कर देती है कि हाँ ठीक है. So the arrangement was made, and tomorrow he shall go, and then they're getting ready to go, and then Mother Yashoda is saying, shoes. You need shoes because it's Vrindavan, it's the forest and full of thorns and sticks and stones. You'll get your soft feet will become hurt. You need a pair of shoes. तो अगले दिन जो है भगवान को गोचारण के लिए भेजने की तैयारियां चालू हो जाती है. तो यशोदा मैया बोलते हैं कि आपको जूते चाहिए क्योंकि वृंदावन जो है उसमें जंगल है, उसमें बहुत सारे कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, तो जूते की जरूरत होगी. Krishna said, we are Gopa. We are servant of the cow. Isn't it? This is who we are. We are servants of cows. That is our. तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम गोपाल हैं, मतलब हम गायों के सेवक हैं. ये हमारी स्थिति है कि हम गायों के सेवक हैं. Yes, yes. Cows have no shoes. I have no shoes. तो कृष्ण बोलते हैं कि जब हम गायों के सेवक हैं और गायों के पास तो जूते नहीं है तो मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ. She said, no, cow is cow. You have soft feet. You have to wear shoes. Lord told, yes, I will wear shoes if you give shoes to the cows. तो जब मैं बोलते देखो गाय गाय है तुम्हारे पैर बहुत बनाए हैं, गाय के तो मजबूत जो है खुद है तो तुमको जूते पहनने चाहिए. नहीं, अगर आप कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर आप गायों को जूते पहनाओगे तो मैं जूते पहनूंगा. What are you saying? We have 900,000 no lakh guy hai or chow pao. Who will make all this shoe? Krishna said, I have shoes, cow have shoes. Cow no shoes, I am not take shoes. I am servant of cows. तो कृष्ण ने जब बोला तो यशोदा मैया चौंक गई, क्या कह रहे हो, गायों को जूते पहनाते हैं और गाय 9 लाख गायों को कहाँ से जूते पहनाएंगे. तो कृष्ण बोलते हैं देखो गाय को जूते पहनाओगे तो मैं जूते पहनूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा. By now she understood. This boy is determined. No use to say anything. Okay, go barefoot. What can I do? तो यशोदा मैया समझ गई ये बहुत जिद्दी है, ये मानेगा नहीं, तो इसलिए ठीक है, बोले तुमको जैसे धरना वैसे जाओ. Everybody loves Krishna in Vrindavan. Everybody loves Krishna. So the cows are also in the Goshala and they're hearing, oh, tomorrow Krishna will also come with us. But the forest is there. We have very hard feet. We have very hard feet. He has very soft feet. He will get spiked. No, it's very bad. The cows are also in great anxiety. तो जब गायों ने भी ये सुना कि कृष्ण जो है कल से हमारे साथ जाएंगे तो गाय भी चिंता में पड़ गई. अरे भगवान के तो जो है चरण है वो बहुत मुलायम है, हमारे तो मजबूत जो है पहले, तो जंगल में तो ठीक नहीं होगा. तो गाय भी जो है चिंता में पड़ गई, वो सोच रही है क्या करें. So in the night time, when everybody's asleep, somehow all the ropes from the necks of the cows opened, and the cows became free. And the cows became free, and they all went to the forest. तो रात के समय गायों का ऐसा हुआ कि उनके जो रस्सियां खुल गई या उन्होंने तोड़ ली, कैसे भी हुआ, और उसके बाद वो सारी गायें जंगल में गई. And they ran all night, all over the forest of Vrindavan, and they broke all the sticks and all the twigs and all the thorns and all the stones, and they turned everything into Vrindavan dust. तो रात भर गायें बाहर पूरे ब्रज में घूमती रही, उन्हें जितने भी कंकड़ थे, पत्थर थे, कांटे थे, लकड़े थे रास्ते में, उनको सबको चूर्ण बना दिया एकदम, और पूरा चूर्ण बना के और पूरा जो है मिट्टी, मुलायम मिट्टी बना दी सब. रात पूरी रात ये करती रही. Just to be sure that Krishna never got any difficulty. Our Lord should not face any difficulty. तो ये निश्चय करने के लिए, ये जो है ये निश्चय करने के लिए कि कल भगवान जब जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. Just like us, right? We're always thinking, Krishna, devotees should not have any difficulty. जैसे हम लोग सोचते हैं कि भगवान के भक्त जो है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए.
So in the morning came, and Krishna is ready with the cowherd boys and the cows, and Nanda Maharaj told, you're very small, you should go with the calves, not with the big cows just yet. First you go with the calves. And it's your first day, so mother and I, we will also come. So जो है अगले दिन जब जाने की तैयारी हुई तो जो है बाबा बोले कि देखो आप अभी छोटे हो तो आप वैष्णव को चढ़ाने जाओगे और चूंकि आपका पहला दिन है तो हम भी साथ में जाएंगे. So they began walking, and Krishna is feeling very shy because mother and father is coming. Nobody else's mother and father is coming. All the cowherd boys and the bigger boys are laughing. Hare Malak, what is this? Mummy Papa hai? सब कोई किसी के मम्मी पापा साथ में नहीं, मेरे माँ बाप साथ में आ रहे, तो सब लोग हंस रहे सारे जो गोपा ने बोलते थे कि तुम्हारा मम्मी पापा चलो. The Lord told, actually, this will not do. This will not work. You come tomorrow. This is my first day. I will go alone. You come tomorrow. तो कृष्ण जो है बाहर निकले हैं और उसके बाद कृष्ण बोले ये ठीक नहीं है, बोले ऐसा करो आप जो है आज मेरा पहले दिन आज मैं अकेला जाऊंगा, आपको जाना तो कल आना मेरे साथ. And we know tomorrow never comes. Right? जैसे कि बोलते कल कभी आता नहीं. Kal. Tomorrow never comes. So Lord also did same trick. You come tomorrow. Today I will go alone. तो जैसे कल करते हम लोग नहीं तो बहुत अनुभव हुआ, कल कभी आता नहीं, कल बोलते कल और कल कभी आता नहीं. तो भगवान ने भी ये जो है ट्रिक लगाई कि कल आप कल आना मेरे साथ. It's not like today when we keep cows, right? It's not like today. In that time, Krishna knew the name of every single cow. Every single cow, every single calf. He knew all of their names. तो भगवान ऐसा नहीं कि आज हम गिनती रखते हैं, पहले भगवान जो है उन्होंने हर एक गाय और हर एक बछड़े का नाम रखा हुआ और सबकी गिनती रखते थे. Even from afar, he could tell by seeing the color, the shape of the ear, the breed, everything. He could tell every individual cow. Sometimes we see cows, they all look exactly the same. We can say, okay, this is this breed. We may identify, this is Tarapaka, this is Rati, this is Gir. But otherwise, they all look the same. But to Krishna, every single cow he could identify. कृष्ण भगवान दूर से ही पहचान लेते थे कि वो कौन सी गाय आ रही है, उसका कैसा रूप है. आज समझते हम लोग पहचान करते हैं, जैसे करते हैं कि ये गिर है, ये थारपाकर है, लेकिन ये जो एक जैसी लगती गाय है, लेकिन भगवान लोग गायों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे कि कौन कौन सी गाय कौन सी. We have some cows in Jaipur. We had one old cow, Gauri. I could recognize her every time because whenever you go near her, she would hit. So they all have their different nature. But Krishna could recognize, he's with all the calves, and he's recognizing, and he's keeping his eye on every single one. He's watching every single calf. तो जो है कृष्ण भी जो है बछड़े चराते थे और वो देखते थे सारे बछड़ों को, जो है नजर रखते थे, एक एक बछड़े को जानते थे और एक एक बछड़े को नजर रखते थे. He's very small. Many of the calves, they are taller than him. He cannot see above the calves. तो अभी कृष्ण बहुत छोटे थे, वो बछड़े से बहुत बड़े थे, तो बछड़ों को ऐसे देख भी नहीं पाते थे एक साथ. So then at one point, he's looking and seeing the calves, and then he sees a calf. And he's thinking, who is this calf? I don't recognize this calf. तो ऐसे कृष्ण जो है एक बार देख रहे थे, उन्होंने एक नया बछड़ा देखा. बछड़ा देखे ये तो हमारे उसमें दिख रहा है, ये कौन सा बछड़ा है, लेकिन इसको तो पहचानता नहीं. Then he called Baladev. थोड़ा confusion हो गया, ये कौन है? तो कृष्ण ने बलराम जी को बुलाया कि दाऊ ये कौन है, ये जो कंफ्यूजन हो, ये कौन है.
And Balaram is saying, he knows all the calves, and he's looking and he's thinking, yes, there's an imposter. This is someone else. This is not our calf. This is another calf. तो बलराम जी भी आके देखे और वो भी सब जानते थे सारे बछड़ों को, तो देखे कि हाँ ये कोई नया बछड़ा है, ये हमारे मिक्स का नहीं। So they're walking and Krishna is watching this calf, and this calf is moving with all the other calves and mooing and being nice and being very gentle and very loving and looking very beautiful little calf. तो ये जो बछड़ा है, ये भी सभी बछड़ों के बीच में बड़े प्रेम से व्यवहार कर रहा है, बहुत ही सभ्य तरीके से और बड़े प्रेम पूर्वक ये जो है उनके साथ चल रहा है, लेकिन कृष्ण की इसमें नजर है। But Krishna and Balaram are looking and thinking, imposter. This is an imposter. तो कृष्ण और बलराम को पूरी नजर उसी पे है, ये कोई दूसरा है। This calf, who is this calf? This is demon sent by Kams. तो ये जो बछड़ा कौन था? ये एक असुर था जो कंस के द्वारा भेजा गया था। Vatsasura. वत्सासुर। Right? Vatsasura. He came, very duplicitous mind, very wicked mind. तो ये जो वत्सासुर था, ये आया था बहुत ही जो है ये धूर्त था, ये चालाकी दिखा रहा था, बछड़े का वेश बना के आया था, असुर था। And he's acting like he's another beautiful, loving calf. He's acting like that. But in his heart is something else. Right? Very wicked person. तो ये जो असुर था, ये ऐसे बाहर से तो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसी टोल का सदस्य है, पूरे बछड़ों के बीच का है, और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसके अंदर हृदय में उसकी बहुत कुटिलता थी। He came with the mentality to kill Krishna. That's why he came there, pretending to be a very innocent little calf. But actually he came to kill Krishna. तो वो ऐसे अपने को ऐसे दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ही जो जैसे और बछड़े वैसे ही वो है, और बड़े प्रेम से व्यवहार कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण को मारने के लिए आया था, कृष्ण को मारना चाहता था। So he's waiting for the chance, waiting for the opportunity. When will I get the chance? I can kick him, I can bite something. When will I get the opportunity? तो वो अवसर की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले, अब मैं कृष्ण को या तो लात मारूं या जो है चोट पहुंचाऊं, किस तरह से उसको अटैक करूं, हमला करूं। He didn't understand that Krishna could identify every calf. He couldn't understand. He thought, I'm well hidden. Nobody can see who I really am. तो जो है असुर है, ये नहीं जानता था कि कृष्ण सारे बछड़ों को जानते हैं। वो सोच रहा है कृष्ण को तो पता नहीं है, मैं तो जैसे और बछड़े के बीच में बैठी हूँ, तो कृष्ण को पता नहीं, वो ऐसा सोच रहा है। So Krishna was surrounded by the calves, and he dropped back, and the calves moved forward, and he came behind, Vatsasura. Vatsasura was not aware, and Krishna grabbed him from behind and lifted him up in the air. तो कृष्ण जो है वो सभी बछड़ों के बीच में थे, सभी बछड़े थे, और कृष्ण जो है धीरे-धीरे वत्सासुर के पीछे आ गए, और वत्सासुर को पता नहीं था कि कृष्ण उसके पीछे आ गया। अचानक ही कृष्ण भगवान ने उसका पैर पकड़ के उसको हवा में उठाया, शांति। And he lifted him up and he spun him. He spun him around and around and around and around, so much that he spun him so much, almost his life air came out. तो कृष्ण उसको इतना जोर से घुमाया, हवा में इतना जोर से घुमाया, घुमाते रहे, इतना तेजी से घुमाया कि उसके जो प्राण है और नमक बाहर निकल आए उसी से। And that Asura threw him so high up into a tree. और फिर जो है भगवान को घुमा के जोर से ऊपर उछाल दिया। And as Lord threw him, this beautiful little calf, and he threw him up into the tree, and he hit the tree, and he gave up his duplicitous calf form, and he showed his real form as a Rakshas demon. He showed his true form. जब भगवान ने उसको उछाल के पेड़ के ऊपर लगा, उछाला जोर से, पेड़ पे लगा ऊपर, तो पेड़ पे जो लगा, तो उसका जो नकली जो भेष था, वो गायब हो गया, और असली जो असुर का रूप था, वो प्रकट हो गया। And as he fell down from the tree, he fell on his head, broke his head, and he died. और जब वो पेड़ से ऊपर से टकरा के जब नीचे गिरा, तो सर के बल नीचे गिरा, उसका सर कट गया और ऊपर गया। And the cowherd boys there, wow, yes. They are extremely excited. Wonderful, wonderful.
तो जितने भी वाले थे वो सब बड़े खुशी मनाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. So this demon, he represents, what is it? Wickedness and weakness. तो ये जो असुर है, वंशासुर, ये हमारे हृदय की दुर्बलता और धूर्तता, हृदय में जो धूर्तता है, विकृतता है, इसको जो है, इसका प्रतिनिधित्व करता है. We all have this. We all have some weakness. We all have weakness. तो ये सब हमारे सबके अंदर है, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं. Nothing wrong with having some weakness, but we should be working to purify. तो अपने अंदर दुर्बलता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए. Sometimes devotees struggle with their senses. Some gross sense gratification. They struggle with that. Sometimes it's like that. कई बार ऐसा होता है कि भक्त जो है इंद्रिय तृप्ति के जो है प्रयास में बड़ा से बचने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं. कि ऐसी कमजोरी होती है हृदय में कि उससे संघर्ष करते हैं. Strange things I've seen in the West. Some devotees, they come to Krishna consciousness smoking cigarettes. It's their weakness. They come to the temple, they try to give up. Oh, okay, now I'm devotee, forget. But that weakness is there. Sometime, due to weakness, they have a cigarette and oh, mistake, and again they throw it away. बोले ऐसा बड़ा आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिलती है, खासकर विदेशों में. विदेशों में हमारी संस्था में जो भक्त जुड़ते हैं, तो कई प्रयास होती है, कमजोरियां होती है, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो जब भक्त बन जाता है तो उसको छोड़ना चाहता है और छोड़ देता है, लेकिन उसी संघर्ष करते रहता है. कभी कभी वो ले लेता है, तो फिर वो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा हो गया, मैं अपने लोग ऐसे संघर्ष करता है. My friend in America, he joined ISKCON like that. He was a cigarette smoker, 2 or 3 packets a day. He's a hard smoker, cigarettes. And then he met Prabhupada, he got Prabhupada's Gita, and said, this is it. I've been searching for this. So intellectually understood, I want to be devotee. He joined the temple. तो उन्होंने बताया कि मेरे मित्र ने आया अमेरिका में, तो वो ऐसे सिगरेट बहुत पीता था, 2-3 पैकेट पी जाता था एक दिन में सिगरेट के. और उसने गीता पढ़ी, तो गीता पढ़ के वो बुद्धि से कन्विंस हो गया, बुद्धि से जो है कन्विंस हो गया कि यही मैं ढूंढ रहा था, अभी मुझे जो है मंदिर में ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन कर लिया. Temple president told him, good, बढ़िया, welcome. No more cigarette. लेकिन जो मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप जो है मंदिर में आ रहे हो, आ जाओ, लेकिन आगे से शराब सिगरेट नहीं पियोगे. समझता है, I understand. Yes, I do. Don't worry, I will do. But he could not maintain, had to have a cigarette. तो उसने बोला हाँ, अब मैं नहीं पीऊंगा, आप चिंता मत करो, अब मैं नहीं पीऊंगा, छोड़ दीजिए. लेकिन परेशानी होती है. So temple president told, okay, this is a dirty thing. This is a very dirty thing. You can have cigarette, but you have to go off the property. You cannot smoke on temple property. You have to go out the gate, around the corner, and stand on the road and have your smelly cigarette. And when you're finished, then you come back and take a bath and change your dhoti kurta because it stinks also, smells bad also. So he had to do this, have a cigarette to go outside, smoke it there, come back in. तो उन्होंने किया ठीक है, तुमको पीना ही है, तो तुमको जो है अंदर से मंदिर में नहीं पी सकते. मंदिर का जो क्षेत्र है उस परिसर से बाहर जाके और एक कोने में जाके या रोड पे जाके पियोगे. और पी के सिगरेट पूरा पीने के आने के बाद आपको स्नान करना होगा, कपड़े धोने होंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बदबू आती है. इसलिए जो है तुम आगे स्नान करना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे. It's just a little weakness. But he's coming every day, Mangalati, he's chanting 16 rounds every day, he's getting purified. So very quickly, he felt so stupid. I'm going outside, put my shirt and pants, go outside, I'd say, come back, take a bath. Nonsense. And he gave it up. तो ये छोटी सी उनके अंदर कमी थी, दुर्बलता थी, लेकिन और सब चीजें पक्की थी. सुबह में करते थे, सोलह का जप करते थे और सब कुछ ठीक से कर रहे थे. लेकिन जब ये रोज का उनको जाना पड़ता बाहर और फिर आगे
स्नान करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो बार-बार उनको समझ घुटता है, उन्हें छोड़ना चाहिए उसको। It's easy for him to understand his weakness. It was a cigarette. It's a gross thing. It's very easy, but there are many subtle things that are not so easy to understand. तो वो पहचान गए अपनी कमजोरी को, लेकिन ये जो कमजोरी थी ये तो स्थूल थी, दिखने वाली चीज थी, लेकिन हमारे अंदर ऐसी भी दुर्बलताएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। The lust and greed and anger and envy, these other kinds of subtle weakness that we have. तो ये तो बहुत स्थूल थी, दिखती थी, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती नहीं है, जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो ये सूक्ष्म दुर्बलताएं हैं। But they are weakness. We follow the process of Krishna consciousness. We follow what Prabhupada has given us, and slowly, slowly we overcome. And we weed out those anathas. We weed out those weaknesses, and we overcome them. तो हम लोग कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं और धीरे-धीरे हमारी कमजोरी से हम जो है ऊपर उठते हैं। So that is killing this demon, Vatsasura. He has so many weaknesses. He's a symbol of different weakness. Krishna comes and cuts those weaknesses out from us. तो जैसे कृष्ण जो है असुर को वध करते हैं, ऐसे ही भगवान भक्ति के द्वारा हम धीरे-धीरे ये जो असुर जैसी हमारी दुर्बलता है, इनको खत्म करते हैं, इनसे ऊपर उठते हैं। But the real problem is, if you do not remove weakness, then that weakness becomes wickedness. तो जब एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब आप अपनी कमी को नहीं निकालते हैं, उससे ऊपर नहीं उठने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वो जो दुर्बलता है वो धूर्तता में बदल जाती है। You know, you have your conscience. They call it your conscience. Paramatma is in the heart. If you're doing something wrong, you know it's wrong, isn't it? You feel, oh, I know this, I did something. You feel guilty, I did something wrong. You know it's wrong. तो ये ऐसा होता है कि जैसे कि कहा जाता है कि भगवान सब देख रहे हैं परमात्मा रूप में, तो हमको समझ में भी आता है कि ये गलत हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये खुद को समझ में आता है। Due to weakness, I fell down, I did something wrong, and I feel guilty. That's a good platform. और अपनी दुर्बलता के कारण हम कभी गलती कर देते हैं, गिर जाते हैं, और हमको जो है उसका दुख होता है, खेद होता है, तो ये ठीक है। But it is dangerous, because if you do that and you don't fix it, then you do it again and you do it again and you keep on doing it. You don't fix it. You keep getting angry all the time. I'm angry. I'm always angry. I get angry with everyone all the time. I get angry. Then it comes to a point, I don't feel guilty about getting angry. That's who I am. Deal with it. Bad luck. तो ये समस्या ये हो जाती है कि इस तरह से जब हम अगर उस समस्या से ऊपर नहीं उठते हैं, उस कमजोरी को निकालते नहीं अपने आदतों से, अपने हृदय से, तो होता ये है कि वो बार-बार करते हैं, बार-बार जो है धीरे-धीरे आदत बन जाती है और हमको दुख भी नहीं होता। गलती करते हैं और हमको उसके लिए कोई पछतावा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में हम जो है जैसे हैं वैसे व्यवहार करते हैं, जैसे क्रोध प्रदर्शित करते हैं, बार-बार क्रोध प्रदर्शित करते हैं और बोले कि मैं ऐसा ही हूँ। That weakness turns into wickedness. तो ये स्थिति में जो हमारी जो दुर्बलता है, जो कमी है, वो धूर्तता बदल जाती है। Isn't it like that? You continue doing something and you're thinking, oh, it's wrong, but you get to a point where it's not so wrong. It's okay. When you justify and you do things that hurt other people, that is just wicked. ये जो स्थिति आती है, तो उस स्थिति में क्या है कि हम ठीक है बोले ये मेरे साथ है और कोई बात नहीं, ये तो है क्या करें, और उसके बाद फिर हम है ना जो है ऐसे व्यवहार करने लगते हैं और उससे दूसरों को हम जो है चोट भी पहुंचाते हैं दूसरों को। They say it's like having two faces. The person is two-faced. When in one, looking at one person, there's one face, and then you see him later on, and there's another person, and a whole different face, a different person. तो ये जब ये स्थिति हो जाती है, धूर्तता वाली स्थिति जो है वैसी है
इसमें देवकी के दो दोगलापन हो जाता है, दो तरह के जो है मुखौटे होते हैं, एक समय एक मुखौटा होता है, दूसरे समय दूसरा मुखौटा होता है. Just like Vatsasura, he's coming in amongst all the calves, looking like a beautiful little calf, right? He's trying to show himself as being a very beautiful, innocent little calf running along, tail up in the air, happy, happy, right? But his mentality is wicked. He's coming to kill Krishna. His reality is something else. तो जैसे ये बत्सासुर था, ये बत्सासुर जो है बड़ा सुंदर दशा बन के आया था, और सब कष्टों के साथ ये भी पूछ उठा के खूब उछल कूद कर रहा था, लग रहा था कि बहुत अच्छा मसला है, ये भी सबके साथ है, लेकिन वो उसके मन में कुछ और था, वो कृष्ण को मारने के लिए आया था. So all of these killing the demons in Vrindavan Leela, they're there to show us these different anarthas that we all have, and that how we should be dealing with it, how we should be removing them from our heart. तो वो कृष्ण जो है जिन असुरों को मारते हैं, ये भगवान हमको ये भी दिखाते हैं कि यही अनर्थ हमारे हृदय में भी है, ये जो अनर्थ रूपी असुर हमारे हृदय में भी है, और इन असुरों को हमको हृदय से निकालना चाहिए, इनसे ऊपर उठना चाहिए कभी से. And today in society, we have people who kill other people, right? People who commit murder and they don't feel bad. He deserved it. Nothing wrong, right? They are so wicked and so corrupt in their mentality, they don't even feel bad for taking another life. तो आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं, यहाँ तक कि किसी का कोई आदमी मार देता है, हत्या कर देता है, और उसको इसका दुख नहीं होता, और दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये जो है हत्या के योग्य था. इस तरह से लोग जान ले लेते हैं और उनको दुख नहीं होता, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं. So Krishna will root out that wickedness from our heart. If we are not careful, Krishna will take it away. He will also purify us. तो हम बड़े सावधान नहीं हैं, लेकिन कृष्ण जो है हमारे हृदय से इन असुरों को बंद करेंगे, तो वो कोई कमियों को हमारे हृदय से निकालेंगे. We should not be duplicitous. We should not pretend to be someone we are not. We should be honest. Who am I really? What is my fallen condition? What are my qualities? Who am I really? We should be very honest. तो हमको जो है ऐसे छल नहीं करना चाहिए, और हमको जैसे है वैसे प्रस्तुत होना चाहिए. ऐसे दिखावा नहीं करना चाहिए कि आप अपने को बड़ा महान दिखाएं. जैसे है वैसे ही हमको रहना चाहिए, सरल होना चाहिए, और जो है इस तरह से दिखावा नहीं करें कि जो है उससे ज्यादा दिखावा नहीं करें. And then identify our own weakness. We all have different mixtures, different combinations, but we all have. We should identify those weaknesses and deal with them and overcome those weaknesses, because if we don't, they'll become wickedness. तो इस तरह से हमको अपनी जो है दुर्बलताओं को पहचानने की जरूरत है. हमको अपनी कमियां देखनी चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, और उनसे ऊपर उठने के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, उनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए. नहीं तो यही जो कमियां हैं हमारी, ये बाद में घुटना पड़ जाएगी. Because if it gets that bad that you can't be saved, then it'll take Lord Balaram with his club. He'll have to come and club you. You'll have to get some heavy reaction, some serious reaction will come to you if you don't deal with it yourself. And Krishna will come in the time factor. He'll deal with it himself. तो अगर हम ऐसे ही करते रहे और नहीं सुधारेंगे अपने को, तो उस स्थिति में जो है बलराम जी है अपना जो गदा से प्रहार करेंगे. नहीं तो भगवान कृष्ण जो स्वयं काल है, काल के रूप में उपस्थित होके वो अपने तरीके से इसको व्यवहार करेंगे. वो बहुत कठिन होगा, बहुत खतरनाक जो है प्रतिक्रिया हमको मिल सकती है. It's a wonderful pastime of Gopashtami, Lord Krishna, first time to take the young calves out, becoming a Gopa and going with the calves every day. Very auspicious day today. First day, Lord goes out with the calves. तो ये जो है बहुत ही सुंदर है आज का. आज के दिन भगवान पहली बार गोचार के लिए गए कृष्ण को लेके. And the first day out kills the demon. Demons, that demon of wickedness and duplicity in the heart. He kills that demon. और पहले दिन उन्होंने ये जो है बत्सासुर का वध किया, जो कि हमारे हृदय में जो है धूर्तता और
Same thing. Wickedness, yeah, it's the same thing. So anybody has any question? How do you identify what are my weaknesses? How do you? Actually, we have this weakness, but it's very difficult to deal with. Some weakness we can overcome very easily, but some it's limited sometimes and become hopeless. But only hope is Krishna. Then we go on the path. You know that this is a weakness, but we are not able to deal with that. So how to do in such conditions? मेरा प्रश्न है कि हमारे हृदय में कुछ कमियां जिनको हम आसानी से जो है देखते हैं, जानते हैं कि हाँ ये हमारी कमी है और इनसे हम आसानी से निकल भी जाते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनमें हम जो है उनको व्यवहार भी कर पाते हैं, उनसे लड़ नहीं पाते हैं और वहाँ हम जो है उनसे हार जाते हैं और हमेशा हार जाते हैं। फिर इसलिए आशा करते हैं भगवान कृष्ण कभी हमको इससे पार लाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? We know what our weaknesses are. It's very difficult how to overcome them. हम जानते हैं, हम जो उत्तर दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि उनसे कैसे निकला जाए। Very lucky position to be in, that he knows his weakness. ये बहुत ही भाग्य की बात है, वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति है कि कम से कम हम ये जानते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं। Most of us, we are more like Duryodhan. I don't have any weakness. ज्यादातर हमारी स्थिति दुर्योधन जैसी होती है, जिसमें दुर्योधन जो है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। Dronacharya told, go out and find someone who's less than you. He went out all day, came back. I don't find anybody. All are useless. Only I am good. तो दुर्योधन के एक बार द्रोणाचार्य ने भेजा था कि तुमसे कोई महान व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन गया और बोले कोई मेरे समान नहीं है, नहीं सोच सकता, वापस अकेला आया। We all suffer this ahankar, this ego. We all suffer from this, right? Many times we have ego clash. His ego doesn't fit my ego, therefore we clash, because we all have ego, right? So how do you identify that? How do you get rid of that? तो जैसे मुझे उदाहरण दे रहे हैं कि अहंकार, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे अहंकार टकरा जाते हैं, हम जानते हैं अहंकार है, लेकिन कैसे उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? We can't even see it, right? We don't even identify it. Of course, I can see yours. I can see his. I can see everybody else. I cannot see mine. I can't see. I don't see my own Maya. I understand your Maya. But what is my Maya? I don't see it. प्रभुजी बता रहे हैं कि हम देख ही नहीं पाते, हम दूसरों के अंदर अहंकार देख लेते हैं, हाँ उसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, दूसरे की माया को पहचानते हैं, लेकिन खुद की माया कि खुद कितना माया में है, खुद में क्या है वो नहीं देखते। Srila Prabhupada said, therefore I have created this International Society for Krishna Consciousness. Because we are all together, right? We're in the same family, Achyuta Gotra, we're all working together and we help each other. Your Maya is this. Please tell me what are my problems. Then we can help each other identify. Otherwise we can't see. What is my fault? What is my weakness? I don't know, one or two small thing, not much. तो इसमें जो हम एक साथ काम करते हैं संस्था में और क्योंकि हम एक दूसरे की माया को देख पाते हैं तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं कि आप मेरी कमी बताओ कि मेरे में क्या कमी है। But it only works if we all have focus on Krishna. If we're all just focused on Krishna, Krishna is the goal, Krishna is everything for all of us. We all have that unified vision of the Lord, then we can learn to cooperate in between. तो लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा सभी का लक्ष्य भगवान कृष्ण और हमारा केंद्र भी भगवान कृष्ण हो, तो उस स्थिति में हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं इस प्रकार से, अन्यथा नहीं। If we recognize the Lord, then we can develop some humility. And when devotee comes and says to us,
Prabhu, not right. This is wrong. This is Maya. We have enough humility. Thank you. Thank you. Yes, thank you. You have saved me. तो जब हमारे अंदर थोड़ी विनम्रता का विकास हो जाता है तो उस स्थिति में जब कोई भक्त बोलता है कि प्रभु जी ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, ये माया है, तो हम प्रभु जी को धन्यवाद दे पाते हैं कि हाँ प्रभु जी धन्यवाद इसका मेरी कमी को बताने के लिए। It's like Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami had many disciples, many disciples, many very good disciples. तो जैसे भक्तिनंद महाराज के बहुत सारे शिष्य थे और कई बहुत सारे शिष्य थे। He had one disciple who would always criticize. Guru Maharaj did this very bad. Guru Maharaj went in the car, he's riding in the car, very bad. Guru Maharaj ate this sweets, so many sweets, sannyasi eating so many sweets, very bad. उनका एक ऐसा शिष्य था जो हमेशा दोस्त देखता था, गुरु महाराज मीटिंग नहीं करते हैं, गुरु महाराज जो है कार में चलते हैं, गुरु महाराज जो है सन्यासी है, पूरी मिठाई खाते हैं, इस तरह उसको दोस्त देखता था। So all the God brothers, all the disciples became very angry. He's a very bad disciple, always criticizing Guru, always very bad person. तो जो और शिष्य थे, जो और गुरु भाई थे, भक्त के, तो वो सब उनको बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे और ये बहुत बुरा आदमी है, ये गुरु में दोष देखता है और गुरु की निंदा करता है। They made a plan. We will go to Guru Maharaj and we will tell him, this nonsense is like this, like this, like this, like this. He will be finished. तो बोले उन्होंने सबने योजना बनाई कि हम सब जाके गुरु महाराज से शिकायत करेंगे इसकी, ये महाराज आपके बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, आप फिर गुरु महाराज को खत्म कर देंगे। So then they went and told to Bhaktisiddhanta Saraswati, Maharaj, Guru Maharaj, this God brother, he's always speaking like this, like this, like this. Bhaktisiddhanta Saraswati, Acha, call him immediately. You call him here, right now. तो सभी जो है जो उनके गुरु भाई थे वो भक्तिनाथ महाराज के पास गए और महाराज को बोले कि महाराज ये जो हमारे गुरु भाई हैं जो है आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो भक्तिनाथ अच्छा ऐसा बोलता है, ठीक है उसको तुरंत बुला लो। The disciple came in the room and all the other God brothers are thinking, now you are done. तो जो है जब उनको बुलाया गया तो जो और शिष्य थे वो देख रहे थे कि अब इसको जो है दंड मिलेगा, आप मजा आएगा, अभी हो गया इसका। Bhaktisiddhanta Maharaj called, come here, sit here, never leave my side, good boy. जो है उसको बुलाए और उसको अपने आसन के पास बैठाए, बोले यहाँ बैठो, बोले कभी भी मेरे पास दूर मत जाना, बहुत अच्छे हो तुम। And disciple, Guru Maharaj, we are always speaking so many sweetly, 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 and you're telling him to stay next. Well, I don't understand. तो वो सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, वो बोले कि गुरु महाराज ये क्या कर रहे हो, ये जो है इतना गंदा व्यवहार करता है, इतना गलत बोलता है, इसको आप अपने पास रख रहे हो। So Bhaktisiddhanta Maharaj spoke, because he will always correct me. I will never become puffed up. If I'm with him, he will correct me. No, too many sweets. No, people will say this, people will say that. He will protect me. Keep him close. Very good. तो महाराज ने उसको अपने और नजदीक रख लिया था, तो महाराज ने बताया कि बोले मैं इसको अपने नजदीक रखूंगा तो मुझे कभी अहंकार नहीं होगा, ये मुझे हमेशा करेक्शन देता रहेगा, महाराज ये ठीक नहीं है, आपने ये ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं जो है ये मेरे लिए अच्छा है। So we need to be humble enough to take advice from all of the devotees. We need to have that humility, but that's who we need to be. We need to be there, helping each other, clarifying what are we doing right and what are we doing wrong. तो हमको ऐसे विनम्र होना चाहिए और भक्तों से जो है सलाह जो होती है उसको स्वीकार करने के लिए हमको इतना विनम्र होना ही चाहिए कि हम भक्तों से जो सही अच्छी सलाह दी जाए उसको स्वीकार कर सकें और जो है सही विचार भी कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। All right. Anything else? Yes, Prabhu. My question is, we know our weaknesses, we try to suppress our weaknesses, but
one more weakness we have that we blame others. That he has done this to me, that is why my weakness has got magnified and it has come out. Otherwise, I was trying to suppress my weakness, but due to the external circumstances or that person has done this, that is why this weakness has got magnified. Yeah. How to deal with this? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम जानते हैं हमारे अंदर कमजोरी है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई हमारे को जो है जब कुछ व्यवहार करता है तो हम उसको दोषी ठहराते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण जो है ये जो प्रवृत्ति है इससे कैसे ऊपर उठा जाए. Yeah, because we're on the bodily platform, therefore we identify everything materially. And it obviously can't be my fault. So we look for someone else to blame. We always look for someone else to blame. But actually, devotee means we should always see Krishna's hand. We should always see whatever is happening to us. It's not because of her or because of him or even this situation. It's Krishna. Krishna is doing this to me to purify me, to make me understand, to learn something, to teach me something. तो ऐसा और हमारी जो भौतिक चेतना का होता है, हम समझते हैं व्यवहार रहता है कि हमारा कोई भी जो है होता है तो हम अपनी कमी को छुपाते हैं और दूसरों को दोष निकालने का दूसरों पे उसको थोपने का प्रयास करते हैं. लेकिन हमको ऐसा देखना चाहिए कि सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय हमको देखना चाहिए कृष्ण का प्लान है, कृष्ण की योजना है हमको शुद्ध बनाने के लिए. हमको इस तरह से देखना चाहिए. So even we don't know our weakness, but Krishna makes situations and arrangements that we become aware and to purify. He makes those arrangements, difficulties and तो हम यहाँ तक कि अपनी कमियों को नहीं देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी परेशानी या ऐसी स्थिति उनको डालते हैं जिससे हम अपनी कमी को देख सकें, पहचान सकें और कृष्ण उसको निकालने की व्यवस्था भी करते हैं, कमियों से उसको निकालने की व्यवस्था. So try not to see externally. Try to see internally the reason behind everything. The reason behind our situation is Krishna. Everything happens is Krishna. तो बाहर देखने के बजाय अंदर देखने का प्रयास करना चाहिए और हमारा ज्यादातर हम बाहर देखते हैं कारण, लेकिन अंदर कारण ढूंढना चाहिए कि ये जो परिस्थिति है इसके पीछे क्या कारण है और कृष्ण की क्या योजना है. तो इस तरह से हमको देखना चाहिए. And even that weakness comes again and again, but we're trying to develop that understanding and that consciousness, and slowly, it does come under control. It's as long as we're working to improve, we'll make improvement. और जब बार-बार हम अगर प्रयास करते हैं अपनी कमजोरी से निकलने का, इवन यहाँ तक कि हम बार-बार जो है उस कमजोरी को नहीं पार कर पाते हैं, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे क्योंकि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो एक स्थिति आती है जब हम उस कमजोरी के अधीन नहीं रहते. So Srila Prabhupada said, it is a gradual process. प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक निर्मित जो है प्रक्रिया है. So be patient. धैर्य रखना चाहिए. All right, thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki jai. Gopashtami ki jai. Thank you very much.